क्या हुआ कोर्ट में? क्या हुआ कोर्ट में? आप लोग बैठ कोर्ट ने क्या कहा है सर? कोर्ट में क्या ऑर्डर में कोर्ट ने क्या कहा है? आज का ऑर्डर क्या रहा? कोर्ट ने कहा है कि वो अगली पेशी को 6 मार्च को एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि रिलीज करने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए कानूनन। सर उसके अलावा जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी काफ़ी दलीलें दी गई। उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल एक्ट के तहत इनको दोषी ठहराया गया है। क्या क्या दलीलें दी गई थी? उनका कहना था कि जो तमाम एक्ट्स इन्वॉल्व हैं जिनके तहत सजा हुई थी वो केंद्रीय कानून है और इसलिए केवल केंद्र को शक्ति है उनको रिलीज करने के लिए, जिसका कि हम लोग खंडन कर रहे थे कि ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार को पूरी तौर से संविधान की धारा अनुच्छेद 161 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 433A में पूरी शक्ति प्रदान है और वो ऐसे मामलों में जहां पर कि दंड को सजाए मौत से घटा करके आजीवन कारावास के लिए कर दिया गया है, वहां प्रांतीय सरकार अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके उनको रिलीज कर सकती है। इसलिए क्योंकि जो तमाम केंद्रीय कानून थे, आर्म्स एक्ट वगैरह, उसमें केवल 2 साल की सजा थी और वो सजाएं समाप्त हो चुकी हैं और अब केवल सवाल इंडियन पीनल कोड का है, जो कि विषय संविधान के जो 7वां शेड्यूल है उसकी सूची तीसरी सूची में है, कंकरेंट लिस्ट में है। तो सर इसका मतलब अगर हम जो है आसान भाषा में जानना चाहें तो अगली सुनवाई तक, जो कि 6 मार्च को होनी है, तब तक तमिलनाडु सरकार इस मामले में कोई और फैसला नहीं लेगी, उन जो है 7 लोगों को जेल से रिहा नहीं करेगी? अदालत ने 3 लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे अभी उनके विषय में केवल आदेश किया है और जो आदेश किया है उसका पालन अवश्य। Sir, in English, if you could repeat, sir, is there a contention over here with regards to CRPC between the centre and the state of Tamil Nadu, which has been brought to light? The Supreme Court has asked for clarification of the procedure followed over here. Yes. So what exactly? The dispute between the central government and the state government is with regard to who is empowered to release these persons after commutation to life. Okay. According to the central government, the various laws under which they were convicted are central laws, and therefore only central government can convict. All right. Whereas so far as our Tamil Nadu government is concerned, our stand is that the state of Tamil Nadu is fully empowered to consider the release of these persons, because the central laws, Arms Act, Passport Act, etc., they all involved only a sentence of 2 years which have already been served out. So today the only question is of Indian Penal Code, and which subject matter is now only under entry 1 of list 3 of 7 schedule of the Constitution. All the 7 will not be released, or only 3? There is a little... No, the court has passed an order only with regard to 3 persons who were involved. So it means Tamil Nadu government can release the other 4? If they want, they can release. What they will do is for them to consider. But what's your advice would be, sir? Advice has to be to the client, not... Okay, thank you. Thank you. Sir, Rakesh, sir. That, of course, was Rakesh Trivedi. He's the counsel for the Tamil Nadu government, going ahead and explaining what really happened in court. The court, as far as we understand, at this point in time has said that till the 6th of March, that is the next hearing on this case, the Tamil Nadu government cannot go ahead and release at least 3 of those 7 convicted prisoners. It's not very clear yet what happens to the other 4, because the court did not hear that matter at all. So the basic contention essentially between the state and the centre is that who has the powers to remit their sentence once there has been commutation of the death sentence. Do remember, of course, that when the Supreme Court had commuted the death sentence, it had mentioned in the last paragraph of that order that the state now has the powers to remit that. So the basic contention is, who is the state per se that has the powers to remit the sentence? Is it the centre or is it the Tamil Nadu government?